Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now we are focusing on 2026 exams, and there will be a lot of exams that will be happening in 2026. So how to prepare well? We are already posting various videos. Now, one of the thing is structuring our study. If we plan properly, if we execute properly, we can get better result with same effort. So one thing is planning. Planning means you must make a perfect timetable. How to make perfect timetable, that we will discuss in this video. For perfect timetable, you should have proper rest as well as proper timing for study for each and every subject. So what you can do is, first of all, you should decide how many hours you can spare for study in a single day. Some people may be able to spare 10 hours, some other people may be able to spare 8 hours, 6 hours, 12 hours, 15 hours. So that will vary from person to person. So what you should do is, you should divide the time available by 5 and make each section of that hours. Say there are 10 hours available with you. So 10 divided by 5. So 2 hours each. And in between, you have to keep rest hours for at least half an hour or 20 minutes gapping. So overall time availability should include the study hours as well as rest hours. So what you can do is, now after distributing this time, making a hour slab, so one portion should be dedicated to English, second portion should be dedicated to quant, third portion for reasoning, fourth portion for your current affair and banking, and the fifth can be miscellaneous. Miscellaneous means whatever subject you want to focus more, you can distribute that, or you can utilize this time for your rest also. During these hours, you should take help of topic test to build your knowledge and topic. You can join the video courses to gain the knowledge. You should attempt the sectional mock test of a particular subject and also attempt speed drill. These are some basic tools that will help you to bridge gap in your knowledge and also allow you to do practice at regular intervals so that you are always exam ready. Link of all these tools is available in description box. Click the link, register, select the video course. There are 4 type of courses. One is English and critical reasoning, second is quant, third is reasoning, fourth all in one. And also take topic test, sectional mock test and speed drill and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can also have annual plan from the same link and apply coupon code AA03 to have 10% off. All these things is also available on Smartkeeda app. Download the app, select these courses and plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now, once a week you can attempt the full length mock test also. Then acquiring knowledge through current affair on regular basis should be part of your perfect timetable. So during hours of current affair, you should read daily PDF from 2 sources. Both the links are available in description box. Click the link, you will land up on an app. Download the app, take 2026 plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. This is a fair cloud source, very good source. Daily, weekly, monthly PDF you will get. Second good source is Smartkeeda Current Affair Mock Drill. Link of that is also available in description box. Click the link, register, take either 4 month, 6 month, 12 month or 24-month plan and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these through Smartkeeda app also. Download the app, select these plans and AA03 to have 10% off. Now, in both the sources, on one side you get daily, weekly, monthly PDF. So initially do from daily PDF. Gradually you can move to weekly and monthly PDF also. In both the sources you have banking, finance, economics PDF also. So cover that also. For your convenience, I have placed the link of 5 video playlist
on banking finance economics, current affair or banking finance economics, banking quiz, shorts on banking, RBI news and RBI circulars. Watch 10 to 15 videos per day, and you can note down the bullet points so that during revision these are helpful. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। अब हम 2026 के एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर हम वीडियोस डाल रहे हैं कैसे तैयारी करें। इसके अंदर किसी भी तैयारी के लिए एक तो हमारी प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा है उसका एग्जीक्यूशन। चीज़ों को प्लान करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कम एफर्ट में अच्छा रिजल्ट आपका आता है। प्लानिंग का पहला हिस्सा है कि हम एक अपना टाइम टेबल बनाएं, परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं और उसको फिर लागू करें। टाइम टेबल बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके पास पढ़ने के लिए कितने घंटे उपलब्ध हैं। किसी कैंडिडेट के पास 10 घंटे रोज उपलब्ध होंगे, किसी के पास 8, किसी के पास 11, किसी के पास 5। जितने भी आपके पास आवर्स उपलब्ध हैं उसको ब्रॉडली 5 हिस्सों में आप डिवाइड करें और कुछ टाइम रेस्ट के लिए भी जरूर रखें। तो मान लीजिए 10 घंटे आपके पास अवेलेबल है, तो 10 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 2 घंटे का एक स्लैब आपका बन गया। अब इन स्लैब्स को आप नाम दे दीजिए कि एक स्लैब में आपको खाली इंग्लिश करनी है, दूसरे स्लैब में खाली क्वांट करना है, तीसरे में खाली रीजनिंग करना है, चौथे में करंट अफेयर और बैंकिंग करना है और पांचवा हो गया मिसलेनियस। जिस भी सब्जेक्ट को आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं पांचवा आप उसको दे देंगे। उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो सकता है, उसके अंदर अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। अब इन आवर्स में आपको करना क्या चाहिए? उस सब्जेक्ट से संबंधित आपको नॉलेज एक्वायर करनी है, जिसके लिए आप वीडियो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक टेस्ट करेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट करेंगे, स्पीड ड्रिल करेंगे और वंस ए वीक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जब आपका टाइम टेबल बना होगा और हर सब्जेक्ट के लिए टाइम डेडिकेटेड होगा तो आपकी जो स्टडी होगी वो बैलेंस्ड होगी। लिंक इन सब का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। 4 तरह के वीडियो कोर्सेज हैं। एक है इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग, दूसरा क्वांट, थर्ड है रीजनिंग, चौथा है ऑल इन वन। तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लें, साथ में टॉपिक टेस्ट ले लें, सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लें, स्पीड ड्रिल ले लें और एनुअल प्लान ले लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इन प्लान्स को सेलेक्ट कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब इसके अलावा आपको करंट अफेयर रेगुलर करनी है। करंट अफेयर के 2 सोर्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 2026 का प्लान ले लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ्स आ जाएंगी। पहले डेली पीडीएफ से पढ़ना है, फिर धीरे धीरे वीकली और मंथली पीडीएफ भी कवर करनी है। दूसरा अच्छा सोर्स है स्मार्ट कीड़ा करंट अफेयर मॉक ड्रिल, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे। 4 महीने का प्लान है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, इस ड्यूरेशन के प्लान आप ले लेंगे। कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इन प्लान्स को सेलेक्ट कर लेंगे, कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। अब इसके अंदर डेली आपने डेली पीडीएफ्स पढ़नी है। इसी के अंदर बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स की पीडीएफ भी है, उसको भी कवर करना है। और बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स के लिए 5 प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने आपको दिए हैं। बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स, बैंकिंग क्विज, शॉर्ट्स ऑन बैंकिंग, आरबीआई न्यूज़ एंड आरबीआई सर्कुलर। 10 से 15 वीडियो इसके रोज के देखिए और तैयारी करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।